Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap. I really believe that all of you are healthy and preparing well for upcoming NABARD Grade A exam. And guys, today you are all welcome to the top 50 MCQ session for the month of August 2022, and this is the part 3 of this particular series in which I am going to discuss the most important general awareness questions which are relevant for the RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam. Okay guys, so before starting the session, if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of the sessions. And to join the Telegram channel, kindly click on the link given in the description below. ठीक है जी? So now, before beginning with this particular session, there is a small instruction to all of you that first of all you are required to also calculate your scores in this particular session out of 50, and also tell me after the end of the session that what exactly was your score. Apart from that, when I talk about the other instruction, you are required to mention that what exactly you think is the right answer in the comment section for the respective questions, and you are just required to tell me the question number as well as the option that you think is the right answer in the comment section. ठीक है जी? So let's begin with this particular session, and the very first question here is on your screen. So in the very first question, you are just required to tell me the name of the platform which has partnered with the Piramal Finance in order to expand the distribution of merchant loans to the small cities and the towns in India. तो basically Piramal Finance के साथ इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है to distribute merchant loans to the small cities and towns in India? And guys, here the right answer to the question is Paytm. So Paytm has basically partnered with the Piramal Finance. ठीक है जी? I hope this is clear. Now moving on to the next question, and the next question is Open Network for the Digital Commerce has recently partnered with which one of the following entities to accelerate e-commerce for the small industries? So you are just required to tell me the name of the entity जिसके साथ ONDC ने recently partnership की है. And guys, here the right answer to the question is SEBI. So guys, when I talk about the SEBI stands for Small Industries Development Bank of India. ठीक है? और जब भी आपको ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलता है, you are always required to remember कि उसकी static information क्या थी. ठीक है? For example, when I talk about SEBI, तो SEBI basically was formed on 2nd of April 1990. Apart from that, you are also required to remember that who is basically the chairman of the SEBI. And guys, when I talk about the chairman of SEBI, it is basically S. Raman. तो आपको ये सभी स्टैटिक पार्ट in particular organizations का याद रहना चाहिए from the exam point of view, and that is what is important. ठीक है? तो इन lines पर भी questions आ सकते हैं. Let's move on to the next question, and the next question is once again on the ONDC. तो आपको मुझे बताना है कि recently which of the following organization become the first big tech company to join the open network for the digital commerce? तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम बताइए जो कि पहली big tech company बनी है to join ONDC. And guys, here the right answer to the question is option E, that is Microsoft. Now guys, when I talk about this ONDC, what exactly it is? Open Network for the Digital Commerce. See guys, when I talk about ONDC, we all know about the Unified Payment Interface UPI. For example, जिस तरीके से हम UPI को हर एक प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, whether it is the Paytm, it is FreeCharge, MobiKwik, Amazon Pay, so हर जगह पे हम UPI को यूज कर सकते हैं. उसी तरीके से to break out the monopoly of the Flipkart, Amazon in the e-commerce, basically this ONDC has been launched, which is basically under the DPIIT under the Ministry of Commerce. ठीक है? So ये ONDC basically क्या करने वाला है? It is going to enable the small merchants and the mom and pop stores to avail and to make the best use of the technologies which are basically deployed by the e-commerce majors, for example Flipkart and Amazon. And that is why this ONDC is, guys, a very very important initiative from the government of India and also from the exam point of view. ठीक है? I hope this is clear guys. Let's move on to the next question. So the next question, you are required to tell me the name of the bank जो कि पहला ऐसा इंडियन लेंडर बना है to frame a policy to fund lab grown diamonds. तो lab grown diamonds की
लिए एक जो पॉलिसी बनाई है उनकी फंडिंग के लिए, वो आपको बैंक बताना है कि उस बैंक का नाम क्या है। एंड हियर द ऑप्शंस आर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक ऑफ बड़ौदा। सो यहां पर इस तरीके के बैंकिंग क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं ऐसा कोई बैंक न्यूज में है रिसेंटली, तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, उस बैंक की टैगलाइन क्या है, उस बैंक के चेयरमैन का नाम क्या है, दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। सो टैगलाइन आप मुझे बताएंगे, एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। टैगलाइन आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। और चेयरमैन की बात करें, सो गाइस हियर द चेयरमैन इज बेसिकली दिनेश कुमार खरा। So he is basically presently the chairman of the State Bank of India. ठीक है, moving on to the next question. So the next question you are required to once again tell me the name of the bank which has partnered with TRADES. TRADES क्या है? TRADES stands for Trade Receivables Discounting System Platform, जिसने recently आपको मुझे उस बैंक का नाम बताना है जिसने TRADES प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है to provide more liquidity to the small businesses at competitive interest rates. तो उस बैंक का नाम मुझे बताइए जिसने इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को साइन किया है और उसका एम क्या है, टू provide more liquidity to the small businesses at competitive interest rate. And here guys the right answer is HDFC Bank. ठीक है, तो HDFC बैंक ने बेसिकली ये पार्टनरशिप साइन की है। एंड हियर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन मेंशन्ड फॉर ऑल ऑफ यू दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल फॉर द M1 एक्सचेंज अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सी यहां पर किसने यहां पर अप्रूवल दिया है और किस एक्ट के अंदर दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, यहां पर ट्रेड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है एंड दैट यू कैन गो थ्रू ऑन योर ओन। नाउ लेट्स move on to the next question which is here on the screen. So यहाँ पर आप मुझे बताना है कि उस particular player का नाम who has been named as the men's footballer of the year for the 7th time by All India Football Federation. जी हाँ, All India Football Federation जिसको recently ही यहाँ पर बैन किया है फीफा ने। तो अब आप मुझे बताइए कि वो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है जिसको 7th consecutive टाइम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यहाँ पर मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज सुनील छेत्री जी। ठीक है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अमंग द वुमेन्स कैटेगरी इट वाज मनीषा कल्याण हु हैज बैग्ड दिस मेडन अवार्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर वंस अगेन रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज रिसेंटली वन द वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022। तो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 रिसेंटली किसने जीता था, एंड दैट इज हियर इन द क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज संगीता अभियान। सो संगीता अभियान हु इज द CEO ऑफ शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, अ केरला बेस्ड एंटरप्रेन्योर, एंड शी हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022. So these are the most important things that you should remember from the exam point of view. Such kind of questions from the different dimensions, for example awards we have done, and we are also going to done some important things about the reports which are being recently released, some important rankings. So ये सभी चीजें आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, they are really very important to be covered from the exam point of view. ठीक है जी। Now the next question is once again from a different dimension of the general awareness, that is the books and authors. और यहां पर आपको मुझे बताना है recently एक बुक है जिसका टाइटल है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी. इट हैज बीन recently published by which of the following? इनमें से कौन सा पब्लिशिंग हाउस है जिसने इसको रिसेंटली पब्लिश किया है? इज इट हैशेट इंडिया, पेंगुइन रैंडम हाउस, और इट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया, और द रूली बुक्स? सो यहां पर although it is very rare that such kind of question will be asked in the exam, but still आपको यहाँ पर इन dimensions को cover करना है. And guys, here the right answer is Rupa Publications India, which has published the book that is Modi @20 Dreams Meet Delivery. ठीक है? Now let's move on to the next question, and the next question is on the Miss India USA 2022. So जल्दी मुझे comment section के अंदर बताइए कि किसको ये award दिया गया है? Who has been crowned as the Miss India USA 2022? So guys, here when I talk about the right answer is Arya Valvekar. And when I talk about Mrs. India USA 2022, it was won by Akshi Jain, and Miss Teen India USA 2022 has been won by Tanvi Grover. ठीक है? So these are the important part, the names that you should remember from the exam point of view, because such kind of questions can be asked in the exam.
ठीक है जी. Let's move on to the next question, and the next question is on a very important event which has recently concluded, that is the Commonwealth Games 2022. and guys, अगर आपने एक डिटेल सेशन जो मैंने लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर नहीं देखा है, तो काइंडली गो बैक एंड वॉच दैट सेशन एज वेल, क्योंकि उस सेशन के अंदर सभी इंपॉर्टेंट चीजें दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम्स आर बीइंग कवर्ड. ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली इन द कमेंट सेक्शन. तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया का टोटल मेडल्स टैली क्या था और इंडिया कौन सी पोजीशन पे थी, दैट इज बेसिकली बीइंग आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड वी ऑल नो that India's performance was recently very good when we compare it with the respect of the last edition that was in the 2018. And when I talk about the right answer to this question, this year India basically have won 61 medals and was on the 4th position in the overall medals tally in the Commonwealth Games 2022, which recently concluded in Birmingham. ठीक है, so all such kind of things are really very important. इंडिया के मेडल्स टैली का कंपोजिशन देखें तो it was 22 gold, 16 silver and 23 bronze medals. And when I talk about the country which has topped, it was basically Australia which topped the list with a total of 178 medals. ठीक है जी, I hope this is clear guys. Let's move on to the next question, and the next question is on a famous sports person, Serena Williams. कौन इन्हें नहीं जानता है? सी गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, एंड आपको मुझे बताना है कि वो बेसिकली कौन से गेम से एसोसिएटेड है. रिसेंटली शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द स्पोर्ट विद विच शी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद. इज इट बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, टेनिस? सो इसी तरीके के क्वेश्चन आप देखते हैं एग्जाम के अंदर आते हैं. द examiner will just name the person who was recently in the news, और आपको बताना होगा कि वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन सी कंट्री से है. तो यहां पर जब हम बात करें तो बेसिकली सेरेना विलियम्स की बात हो रही है, who has recently announced retirement. and guys, here the right answer is tennis. So she is the one and only tennis player in the history to have won 23 Grand Slam titles, and she belongs from the country of USA. So we have covered all the important dimensions that are required to be covered from this news article from the exam point of view. Let's move on to the next question, and the next question is on the World Alliance Day. तो World Alliance Day कौन सी डेट को मनाया जाता है? See, we always tell you that whenever you are finding any news article which is related to important day, what are the important themes, what are the important dimensions that you are required to cover? First one is the date and the second one is the theme. ठीक है जी, तो यहां पर जब हम बात करते हैं डेट की, जिस दिन वर्ल्ड अलायंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज बेसिकली August 10, 2022, जिस दिन वर्ल्ड अलायंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. Now let's move on to the next question, and the next question is on the World Biofuel Day 2022. तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था डेट, ठीक है. अब यहां पर there is a question on the another dimension, that is on the theme. तो World Biofuel Day 2022, which is celebrated on 10th of August 2022, you are required to tell me that what exactly was the theme for this year, for the year 2022, for the World Biofuel Day. And guys, here the right answer is option A, that is biofuels for sustainability and rural income. So this is basically the right answer to this particular question. I hope that this is very much clear to all of you. Now let's move on to the next question, and the next question is on Spark, the Space Tech Park. See, this is India's first virtual space park. और इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा कोई पार्क लॉन्च कर सकती है, which is basically responsible to come up with such kind of India's first virtual space. See, we all know कि right now private players are also being allowed in the Indian space sector to a limit, but when I talk about the India's first virtual space park, you are required to tell me the name of the organization which has recently unveiled this, and guys, it is none other than ISRO. ठीक है, तो Indian Space Research Organization has come up with the India's first virtual space park that is titled as Spark, the Space Tech Park. तो whenever you are finding such kind of organization, guys, I always tell you that उसके चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है, कब फॉर्म हुआ था, these are important points that you should remember. तो इसरो की बात करें तो उसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है, इट इज बेसिकली एस सोमनाथ जी. ठीक है जी, तो ये नाम आपको कभी नहीं भूलने हैं whenever you are covering such kind of news articles. Let's move on to the next question, and the next question you are required to tell me the name of the company which has recently tied up with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and the Capacity Building Commission. ठीक है, और उसका बेसिकली एम क्या है? See, whenever there is an MOU partnership signing of letter of intent, तो यहां पर क्या होता है, there are always some parties जिनके बीच में उसको साइन किया गया है. And the second important thing
थिंग इज दैट एम. तो ये दो डायमेंशंस हैं जो आपको कवर करनी है whenever you are covering any MOU. The first one is the parties and the second one is that what exactly is the aim of the MOU. तो जब हम पार्टीज की बात करें here, पार्टीज का नाम मेंशन्ड है बट एक पार्टी का नाम मिसिंग है, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. जब हम एम की बात करें, द एम इज टू बूस्ट द फंक्शनल कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ नियरली 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया. सो यहां पर जो हमारी मिसिंग पार्टी है दैट इज बेसिकली ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट, विच हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन in order to boost the functional computer literacy of the civil servants of India. That is what the right answer to this question. Let's move on to the next question, and the next question is regarding the government of India का recent target. तो recently यहाँ पर government of India ने target set किया है to raise the share of the natural gas in the energy mix to -% by 2030 from the current 6.3%. तो जब हम बात करते हैं इंडिया का शेयर, इंडिया का शेयर in the natural gas in the energy mix is basically 6.3%, and now it has been increase to what percent? That is what you are required to tell me in the comment section, guys. And here the right answer is 15%. So 15% is the right answer to this question. A very important thing. See, we all know that there is a syllabus. Syllabus के अंदर एक topic है that is sustainable development and environmental issues, जिसका ये particular news article part बनता है. And this is a very important kind of article and topic which is mentioned in the syllabus, and that is why you are really required to cover it very comprehensively. ठीक है जी. अब अगली हम बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर. ठीक है, तो रिसेंटली यहां पर UNCTAD विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट आई है डिजिटल करेंसीज के ऊपर, और क्वेश्चन में पूछा है दैट इंडियाज क्रिप्टो ओनरशिप इज द डैश हाईएस्ट ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज. तो इंडिया की बेसिकली क्या पोजीशन है उसके अंदर, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर, दैट इन द टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज द 15 इकोनॉमीज वर द डेवलपिंग इकोनॉमीज. और यहां पर इंडिया की जब हम बात करें तो इंडिया का जो रैंक है इट वाज बेसिकली 7th. ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, whenever you find such kind of organizations, whenever you are finding such kind of organizations जो recently report release करता है, तो उसकी यहां पर static information क्या है, that is also you are required to remember. For example, headquarter की जब हम बात करें UNCTAD की headquarter और secretary general, तो secretary general आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन है उनके. ठीक है, जब हम बात करते हैं हेडक्वार्टर के, इट इज बेसिकली इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर. रिपोर्ट का नाम है UNCTAD रिपोर्ट ऑन द डिजिटल करेंसीज. इंडिया की पोजीशन है 7th. जब हम बात करते हैं ऐसी किसी रिपोर्ट के, ऑलवेज यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि टॉप किसने किया, वर्स्ट परफॉर्मर कौन था. टॉप परफॉर्मर की बात करें तो यूक्रेन हैज टॉप्ड दिस पर्टिकुलर लिस्ट व्हिच वाज फॉलोड बाय रशिया, वेनेजुएला, सिंगापुर, केन्या एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है जी, सो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिमेंबर अनदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग व्हिच इज मेंशन्ड हियर, दैट एज पर द रिपोर्ट 7.3% ऑफ द इंडियंस ओन्ड डिजिटल करेंसी एज ऑफ ईयर 2021. तो ये काफी इमर्जिंग ट्रेंड के अंदर है, एंड दैट इज व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक व्हिच हैज लॉन्च्ड recently launched the lifestyle focused corporate salary account जिसका नाम है क्रीम. तो recently एक अकाउंट को ओपन किया गया, it is an initiative of one of the bank जो कि specifically lifestyle focused corporate salary accounts के नाम पे खोला गया है, और उसका नाम है क्रीम. तो आपको मुझे बताना है उस बैंक का नाम जिसने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक. ठीक है जी, तो कोटक महिंद्रा बैंक is basically the right answer to this particular question. I hope this is clear to all of you. Let's move on to the next question, and in the next question again you are required to tell me the name of the bank which has partnered with IBSFI Intech, a treasury tech solution provider, and why exactly the partnership has been done in order to provide enhanced digital services for the corporate clients. तो corporate clients के लिए और बेहतर digital services देने के लिए यहाँ पर ये partnership की है IBSFI Intech के साथ. तो बेसिकली क्या है उस बैंक का नाम जिसने इस पार्टनरशिप को किया है, एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज यस बैंक व्हिच हैज पार्टनर्ड विद IBS FinTech व्हिच इज अ ट्रेजरी टेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ग्रोथ रेट. तो रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने यहां पर अपना आउटलुक प्रोवाइड किया था, और उन्होंने बताया कि इंडिया कुड एमर्ज एज एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी.
बट इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर. द ऑप्शंस आर 6%, 8%, 7%, 9% and 10%. So such kind of options you will find in the exam as well. And guys, here the right answer is 7%. और जब हम इंडिया की contribution की बात करें in the Asian as well as the world global growth, then it is basically 28% for the Asian and 22% for the global growth. A very very huge number and a very important number from the exam point of view. ठीक है जी, I hope this is clear guys. Let's move on to the next question, and the next question is you are required to tell me the name of the personality who has won the Indian Council for Cultural Relations Distinguished Indologist for 2021 award. A very important award which was being given recently, and this has been basically given to option A, that is Jeffrey Armstrong. Jeffrey Armstrong guys, this is a person from Canada. ओह, कनाडा की जब बात करते हैं तो इट इज बेसिकली कैपिटल उसकी है ओटावा, उसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ठीक है जी. और उसके अलावा जब हम बात करते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर की, इज बेसिकली जस्टिन ट्रूडो. ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी कंट्री, आपके सामने किसी कंट्री का नाम आता है, ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या है, और आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए कि हाँ हाँ ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन है जो मुझे याद रखनी है. अगर आपको आती है दैट इज वेल एंड गुड. इफ यू डोंट रिमेंबर दैट, देन काइंडली सीक थ्रू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री, बिकॉज अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट कंट्री एज वेल. ठीक है जी, तो जेफरी आर्मस्ट्रांग इज बेसिकली फ्रॉम कनाडा एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वासा, दैट स्टैंड्स फॉर the Vedic Academy of the Science and Arts. ठीक है, let's move on to the next question, and the next question is on the 49th Chief Justice of India. So recently, who among the following has been appointed as the 49th Chief Justice of India? And guys, here the right answer to the question is Justice Uday Umesh Lalit, who is going to replace Justice N.V. Raman. So he will be basically the 49th Chief Justice of India. A very very important question, and I'm marking the star here guys. So I hope that this is clear to all of you. Let's move on to the next question, and the next question is recently Rajiv Gandhi कैंसर इंस्टीट्यूट ने, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, इट हैज गॉट the first made in India surgical robotic system, and you are required to tell me the name of that particular system which has been developed by SS Innovations. So it is SSI सुख, शक्ति, मंत्र, जीवन और स्वास्थ्य. काफी क्लोज ऑप्शंस हैं और इसी तरीके के ऑप्शंस यू विल फाइंड इन द एग्जाम एज वेल. बट यहां पर आपको मुझे बताना है कि क्या है उस पर्टिकुलर रोबोटिक सिस्टम का नाम जिसको रिसेंटली लॉन्च किया है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ने, विच इज बेसिकली इन न्यू दिल्ली. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर इज SSI मंत्र. तो इट इज बेसिकली अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कार्डियक सर्जन हु हैज बीन, जिनका नाम है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव. वंस अगेन दिस नेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो ये सभी चीजें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द 44th चेस ओलंपियाड 2022 which was recently held in India, but at which place? That is what you are required to tell me. See, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक इवेंट है जो कि चेस गेम से एसोसिएटेड है, और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी सिटी के अंदर हुआ था रिसेंटली, और यहां पर उसके विनर्स कौन है हम ये भी डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग पार्ट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द सिटी वेयर, द प्लेस वेयर इट वाज बेसिकली होस्टेड, इट वाज चेन्नई इन तमिलनाडु. ठीक है, और जब हम बात करते हैं विनर्स की, सो बेसिकली Uzbekistan won in the open event for this particular Olympiad, that is 44th edition of the Chess Olympiad which held in Chennai, Tamil Nadu. और जब हम बात करते हैं कि गोल्ड मेडल वुमेन्स टूर्नामेंट के अंदर किसने जीता है, सो इट वाज बेसिकली वन बाय यूक्रेन. So Ukraine has won the gold medal in the women's tournament, and when I talk about the Uzbekistan, it has won in the open event. So these are the very important point guys. That is what you are required to remember from the exam point of view. Host कौन सा था और कौन सी सिटी ने किया है, और उसके बाद winners कौन है, that is a very very important thing that you should remember. Now let's move on to the next question. The next question is on the Umeed marketplace which was being recently launched. So Umeed marketplace under the Avsar scheme of the Airport Authority of India was opened at which of the following airports? तो recently यहाँ पर कौन से एयरपोर्ट पे इसको लॉन्च किया गया, that is a very important part. So guys, when I talk about the place where this particular Umeed marketplace was being launched, it is basically Jammu. तो यहाँ पर Avsar scheme, see Avsar scheme is basically of the Airports Authority of India. और whenever you find such kind of acronyms, उसका full form क्या है आपको हमेशा पता होना चाहिए, और उसका full form क्या है, it is basically the airport as venue for the skilled artisans of the region scheme. ठीक है, ये एक स्कीम है जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्लेस प्रोवाइड की जाती है एट द एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के ऊपर एक प्लेस प्रोवाइड कराई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, सो दैट दे कैन शोकेस देयर सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स, एंड दिस प्लेस इज बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days to these self help groups, and this is how it is a very important initiative from the Airport Authority of India to promote the products which are basically made by these self help groups. A very important initiative, guys. Let's move on to the next question, and the next question is on the National Thermal Engineer Day. So once again, tell me the date on which basically the National Thermal Engineers Day is being celebrated, and here the right answer to the question is July 24, 2022. So this is the right answer to this question, and such kind of questions are being asked in the exam, and that is why it is very important. For example, I can quote example here. There was a question on the Coal Miners Day. RBI Grade B exam phase 1 for this year, there was a question on the Coal Miners Day, and that is why such kind of days are really very important, guys. Let's move on to the next question. So now you are required to tell me the name of the country here. See, recently IMD and UNDP, that is United Nations Development Program, उन्होंने पार्टनरशिप की है to jointly launch a project, और वो कौन सी कंट्री के साथ किया, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. और जब भी ऐसा कोई जॉइंट प्रोजेक्ट है तो उसका एम क्या है, दैट इज टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन इन द 10 इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज. तो 10 इंडियन स्टेट्स और यूटीज के अंदर हमें क्लाइमेट एक्शन को और ज्यादा एक्सेलरेट करना है. उसके लिए आईएमडी, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और यूएनडीपी ने एक एमओयू साइन किया है, बट कौन सी कंट्री के साथ किया है, एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री इज जापान. तो जापान के साथ किया है. जापान की अगर हम बात करें, कैपिटल है टोक्यो, उसके पीएम है फूमियो किशिदा. ठीक है जी. तो यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग एनी फॉरेन कंट्री इन द रीसेंट न्यूज, ऑलवेज कवर कि उसका स्टैटिक पार्ट क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री. ठीक है जी, जिन्होंने पैक्ट साइन किया है एनबीसीसी के साथ, दैट इज अ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, in order to redevelop their housing complexes in the New Delhi. And I want to give you a hint, जब हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर के इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, it is basically डॉक्टर एस जयशंकर. एंड नाउ आई रियली बिलीव कि आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही इजी हो गया होगा. दैट इज नन अदर देन ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है जी, उसकी टेंटेटिव कॉस्ट आपको दी गई है, दैट इज 175 करोड़. नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यहां पर यूनियन मिनिस्टर कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री है, किसके साथ पैक्ट साइन किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द 2022 नेचर इंडेक्स रैंकिंग्स. तो आपको मुझे बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है विच हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज एज पर द 2022 नेचर इंडेक्स रैंकिंग्स. So here guys, the options are University of Hyderabad, IIT Kanpur, Amity University, Indian Institute of Technology Hyderabad and IIT Tirupati. See, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, बहुत ही दो ऑप्शंस हैं जो क्लोज हैं दैट, और यहाँ पर आपको उनके बीच में बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है, और वो कैसे होगा, थ्रू रिविजन. एंड दैट इज व्हाई वी आर टुडे रिवाइजिंग ऑल द पार्ट्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीक इन आवर फास्ट ट्रैक सेशन. तो हमने फास्ट ट्रैक सेशन में जो कुछ पढ़ा है इस हफ्ते, हमने वो सब कुछ कवर कर लिया है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, और हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी जो बाकी की चीजें हैं उसको कवर करेंगे. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. तो वो जो क्लोज ऑप्शंस थे वो बेसिकली कौन से थे, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद. तो यहां पर जब मैं बात करूं आंसर की, द आंसर इज बेसिकली द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एंड आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड व्हिच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च, और आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी एंटिटी है जिसने इसको लॉन्च किया है. सो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड इज बीइंग लॉन्च्ड, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि किसने उसको लॉन्च किया है. व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग दिस क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट, इट इज दीज टू वर्ड्स, दैट इज इंडियाज फर्स्ट. तो किसी भी न्यूज में अगर इफ यू आर फाइंडिंग इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और यहां पर आंसर बात करें तो आंसर है इस क्वेश्चन का नवी म्यूचुअल फंड. ठीक है, तो नवी म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड. Let's move on to the next question. Now the next question is, RBI ने recently disallow किया है the use of letter of comfort which will impact loans worth. तो आपको मुझे बताना है बेसिकली उस लोन का यहाँ पर अमाउंट किया है जिसका जहां पर ये इतने लोन्स को इम्पैक्ट करने वाला है. What exactly is the right answer to this particular part?
इज इट 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000, 40,000 और 35,000 करोड़? तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा इस लेटर ऑफ कंफर्ट के बारे में. इट इज बेसिकली यूज्ड बाय द फॉरेन कंपनीज हैविंग द सब्सिडियरीज इन इंडिया. तो बेसिकली फॉरेन कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं जिनकी सब्सिडियरीज हैं इंडिया के अंदर, एंड दे बेसिकली टेल कि भाई जब भी हमारी सब्सिडियरी को यहां पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, वी विल लेंड आवर हैंड टू देम, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं आंसर की, तो आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज 35,000 करोड़. तो आरबीआई ने रिसेंटली डिसअलाउ किया है लेटर ऑफ कंफर्ट को. इट इज अ लेटर दैट स्टेट्स दैट द पेरेंट कंपनी सपोर्ट्स द सब्सिडियरी इन द प्रोसेस एंड दे विल लेंड देयर हैंड whenever wherever required. And this is an important point that you should remember from the exam point of view. And I already told you that it is generally used by the foreign companies whose subsidiaries are there in India. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द फ्रांस शेवालियर डे ला लेजेंड डे ऑनर अवार्ड. तो यहां पर व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अवार्डेड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड फॉर हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस? सो गाइस, इज नन अदर देन शशि थरूर जी. दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो यहां पर जब भी ऐसा कोई अवार्ड दिया जाता है, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द कंट्री जो अवार्ड दे रही है, क्या अवार्ड का नाम है, और वो पर्सन जिसको ये अवार्ड दिया गया है. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड रिमेंबर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स व्हिच हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसके अंदर है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड. तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर इज 4. तो यहां पर वो चारों के चारों नाम आपको दिए गए हैं, वो पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं इन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया है ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर टू कैप्चर क्रिटिकल डेटा रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन फ्रॉम द अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स ऑफ द PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट मेकर्स. एंड गाइस, हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जिसने इसको बेसिकली लॉन्च किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, दैट इज NIOT के साथ टू प्रोटेक्ट इट्स कोस्टलाइन. तो अपने कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है स्टेट ने. क्या है उस स्टेट का नाम? एंड गाइस, इट इज नन अदर देन ओडिशा, व्हिच इज ऑप्शन डी. सो ओडिशा इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द चिराग scheme. So guys, I always tell you that whenever you find such kind of long questions, always focus on that what exactly are the keywords. यहाँ पर keywords की बात करें तो चिराग स्कीम है, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, ऑप्शंस में यहाँ पर स्टेट के नाम दिए गए हैं. सो बेसिकली आपको इतना बताना है बस कि ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है. दैट इज ओनली थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. एंड गाइस, हियर द राइट आंसर इज हरियाणा. तो बेसिकली जब हम चिराग स्कीम की बात करें तो चिराग स्कीम, हियर चिराग स्टैंड्स फॉर चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम. ठीक है, तो अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग देयर कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स की इनकम इज लेस देन 1.8 लाख रुपीस एनुअल इनकम. ठीक है, तो वो बच्चे बजट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं फॉर क्लास 2nd टू क्लास 12th. ठीक है जी, तो ये क्लासेस हैं और ये हमारा ब्रैकेट इनकम है, इनकम ब्रैकेट है. अगर इससे इनकम कम है और वो बच्चे अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सो दे कैन टेक एडमिशन इन द क्लास 2 to class 12th इन द बजट प्राइवेट स्कूल. दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज ऑल अबाउट. और इस स्कीम के अंदर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फीस है फॉर पर्टिकुलर क्लासेस, अलग अलग फीस है जो कि रीइंबर्स करती है गवर्नमेंट टू ऑल दीज पर्टिकुलर पेरेंट्स. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी. Which of the following e-commerce platform has recently signed an MOU with the Varanasi, Uttar Pradesh government to empower national market access for the artisans, weavers and people with the disabilities? A very very important initiative taken by one of these e-commerce. And guys, here the right answer is Flipkart. तो Flipkart ने basically अपने समर्थ प्रोग्राम के अंदर ये MOU साइन किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, and that is very important to be remembered. Now the next question is on the World Elephant Day. So quickly tell me in the comment section that what is the right answer. World Elephant Day कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? एंड दैट इज बेसिकली August 12, 2022. 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द थीम
for the recently celebrated International Youth Day 2022. Once again, International Youth Day is also celebrated on August 12. तो आपको मुझे बताना है बेसिकली क्या है थीम जिसके साथ उसको सेलिब्रेट किया गया था for year 2022. And guys, here the right answer is intergenerational solidarity, creating a world for all ages. So I already told you what is important when you are covering any important day. First of all, the date that we have covered here, then the theme that we have also covered here in this particular part. ठीक है जी, I hope this is clear guys. Let's move on to the next question, and the next question is you are required to tell me the name of the ministry और जिसकी ये स्कीम है दैट इज स्माइल 75. सी स्माइल स्कीम जिसके ऊपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था आरबीआई के फेज 2 में फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको मुझे बताना है जब हम स्माइल की बात करें तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस. ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? बेसिकली हियर द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री एंड अ वेरी वेरी important scheme here, and I am marking the star here. Now the next question. So guys, the next question is on the अटल पेंशन योजना. तो आपको मुझे बताना है कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो हमारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं दे विल नॉट बी अलाउड टू एनरोल इन द अटल पेंशन योजना. अटल पेंशन योजना guys, this is basically a scheme which was operational from 1st of June 2015. 1 जून 2015 से ये ऑपरेशनल हुई थी. रिसेंटली covered 7 years. It completed 7 years. और ये basically क्या है? It is a social security scheme to provide the Indian social security, and this is basically launched for the poor, underprivileged and unorganized workers. इसके अंदर जब हम बात करते हैं eligibility की तो it is basically 18 to 40 years के जो लोग हैं इसमें खुद को enroll करा सकते हैं, provided they should not be enrolled in any other scheme of the statutory body. And apart from that, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि उनको पेंशन कितनी मिलेगी, so after attaining the age of 60 years they can get the pension of 1 to 5,000. ठीक है, that is 1,000 to rupees 5,000. ठीक है, so that is basically the range. And guys, when I talk about the right answer to this question, the right answer is option D, that is October 1 2022. So we have discussed the whole scheme, we have discussed the recent part, and that is what you are required to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question, and the next question is on Agastyamalai Elephant Reserve. ठीक है, this was notified as the 5th elephant reserve in which of the following states. So you are just required to tell me the name of the state जहां पर अगस्त्यमलई elephant reserve को notify किया है as the 5th elephant reserve, and guys, this is basically Tamil Nadu. So Tamil Nadu is the right answer to this question. Now the next question, और next question में आपको मुझे बताना है as per the data released by the National Statistical Office, the retail inflation moderated to -% in July 2022. So what exactly the retail inflation which moderated to -% in July 2022? And guys, here the right answer is 6.71%. ठीक है, जब हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की तो जुलाई 2022 के अंदर इट मॉडरेटेड टू 6.75% एज अगेंस्ट 7.75% इन द जून 2022. सी एक महीने के अंदर यहां पर 1 पॉइंट यहां पर कम हो गया, दैट इज 100 बेसिस पॉइंट्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर. रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें इट वाज 6.7%, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर दैट यू शुड रिमेंबर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट एशियन पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटेन. See, you must be thinking that yes, this is a kind of करंट अफेयर कि हो सकता है कि रिसेंटली पहला कोई एशियन पर्सन हो जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना ब्रिटेन का, but not at all. This is basically a question from the history. And guys, when I talk about the right answer here, as you can also see that all these particular people that they have basically passed away. For example, Sardar Vallabhbhai Patel जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड दादा भाई नौरोजी जी. ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी नाम हमारे बहुत ही पुराने हैं. एंड गाइज, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो हिस्टोरिकल. तो ये रिसेंटली नहीं है, बट ये क्यों था न्यूज के अंदर, दैट इज व्हाट आई विल बी गोइंग टू टेल यू इन दिस अपकमिंग पार्ट. सो यहाँ पर व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दादा भाई नौरोजी. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस घर के अंदर जो लंदन में घर था दादा भाई नौरोजी जी का, उनको रिसेंटली ब्लू प्लेक ऑनर दिया गया है. एंड दिस इज बेसिकली गिवन बाय द यूके गवर्नमेंट. किसको दिया जाता है? जो बिल्डिंग्स की कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उन बिल्डिंग्स को ये ऑनर प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी व्हिच वाज द ओनली इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन द Forbes Cloud 100 list. So what exactly is the name of that only Indian company, guys? And here the right answer is option A, that is Razorpay Software Private Limited, which was 49th in this particular list. Moving on to the next question. So the next question, you are required to tell me the name of the entity which has won the best growth performance award at Dun and Bradstreet 22nd edition of
India's top 500 companies corporate awards. तो इंडिया टॉप 500 कंपनी कॉर्पोरेट अवार्ड्स के अंदर यहाँ पर बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड कौन सी यहाँ पर इस एंटिटी को मिला है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर. एंड गाइस हियर द राइट आंसर इज मुथूट फाइनेंस which has won this particular award. And now moving on to the next question. The next question you are required to tell me the amount. See, recently Abu Dhabi Investment Authority ने इन्वेस्ट किया है 9.99% stakes of the Aditya Birla Health Insurance. वो कितना अमाउंट में किया है, that is what you are required to tell me. So although these kind of questions are very rare but still very important to be covered. So guys, here the right answer to the question is option A, that is 665 crores. That is the right answer to this question. Let's move on to the next question, and the next question is you are required to tell me the basically the profession. See, we all know that whenever there is a person in news, आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है, उसका नेम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और साथ में वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो नाम की हम बात करें तो द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल इज बेसिकली शिव मोगा सुबन्ना. ठीक है, you are required to tell me कि उनका प्रोफेशन क्या है. So when I talk about the profession of this particular person, he was basically a singer. ठीक है, तो प्रोफेशन उनका था सिंगिंग का, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि फ्रॉम विच स्टेट ही बेसिकली बिलोंग्ड टू. ठीक है, तो ये सब पार्ट आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू टेल मी दैट नेम ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड. सो गाइस, क्विकली टेल मी दैट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन रिसेंटली appointed as the brand ambassador of Uttarakhand. And guys, here the right answer to the question is option D, that is Rishabh Pant, who has been appointed as the brand ambassador of Uttarakhand. Now guys, we are moving towards the last question of our today's session, that is which of the following states is set to host the second edition of the Northeast Olympic Games 2022. तो वो कौन सी स्टेट है जो कि बेसिकली इसको होस्ट करने वाली है. When I talk about the first edition, it was basically hosted by Manipur, and when I talk about the second edition, so second edition it is will be hosted by Meghalaya. Here you can see that the Meghalaya is the right answer. First edition was hosted by Manipur. So guys, today we have covered all the most important questions from our fast track sessions. For the past week we have revised all the questions. Now there is a good news for all of you that we are running basically a super weekend sale in which we are offering flat 40% plus additional 10% off on our RBI Grade B, NABARD Grade A and SEBI Grade A courses. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को अवेल करने के लिए व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द कोड EduTap which is only valid from 18th of August to 20th August 2022. ठीक है जी. So guys, now you are required to tell me that what exactly was your score out of 50 in this particular session, and if you are having any queries, what you can do, you can just mail us at hello@edutap.co.in. You can also call us at 8146207241, and you can also mention your queries in the comment section. ठीक है जी. So I hope that today's session was really very much useful and fruitful to all of you, and you must have enjoyed this particular session. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.